I'm Ekta. I'm the author of Mindful Minutes. That's my second book, newly launched, available on Amazon. So the reason for making this particular video, it's actually just the starting. This is the first video in a series of videos that I'm going to talk about why the cause of digital detox is so close to my heart, and how does the book help with that. The first things first, thank you everyone for those who have already made the book a bestseller in their category, and I'm so grateful to all of you who have actually started using the book. I'll also leave the link to the book in the comment section. Now, coming back to the point, क्या रीज़न था इस बुक को लिखने का या बनाने का? लिखा, मैंने डिज़ाइन किया है पूरा, and the reason was that anytime I meet people of my age, of younger generation, उनसे जब से कोई भी बात करो तो यही बात होती है that the children, the youngsters, the teenagers, and even children as young as 2-year-olds are completely hooked on to digital devices. बहुत ज़्यादा खाना खाना है तो हाथ में मोबाइल होना चाहिए, गाना चल रहा है तो हम खाना खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे. तो बड़ा ही एक पेनफुल सी सिचुएशन है. एज अ कोच, एज अ रेकी हीलर, आई थिंक मेरी एक ड्यूटी बनती थी कि मैं उसको थोड़ा सा डीप में रिसर्च करूं कि ऐसा क्या है जो हम वापस नहीं आ पा रहे, या बच्चों को ऐसा क्या इम्पैक्ट हो रहा है. इम्पैक्ट नहीं, रीज़न क्या है, ठीक है, क्यों ये हुक्ड अप हो रहे हैं, क्यों घर वालों के साथ नहीं बात करना चाहते, एंड दे आर रेडी टू स्क्रॉल, डूम स्क्रॉल यूट्यूब्स एंड रील्स एंड एवरीथिंग, है ना. सो आई जस्ट वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ रिसर्च, एंड माई कोच हस्बैंड ऑल्सो हेल्प मी अंडरस्टैंड कि देयर इज अ डोपामाइन रश एवरी टाइम वी कीप ऑन स्क्रॉलिंग अ रील. कोई रील मिलती है हमें, या कोई हम गेम का लेवल क्रॉस करते हैं, तो एक डोपामाइन रश हमारे ब्रेन में रिलीज होता है. डोपामाइन इज अ हार्मोन दैट इज रिलीज बाय द ब्रेन, एंड वो क्या करता है दैट इट वांट्स यू टू लुक फॉर मोर ऑफ सच सिचुएशंस. तो हम एक रील देखते हैं, फिर दूसरी देखते हैं, फिर तीसरी देखते हैं, और हमें पता ही नहीं चलता टाइम कहाँ जा रहा है. और इट्स नॉट ओनली विद द टीनेजर्स, नॉट विद द यंगस्टर्स, even people like me, and young generation, old generation, middle age, everybody is getting impacted by the habit. तो मेरा पर्पस था कि जो भी मेरे पास नॉलेज है उसके बेसिस पे, and as a writer, let me try to find a solution. So this book, Mindful Minutes, gives you a solution. जैसे बुक का नाम सजेस्ट करता है, दैट इट हेल्प्स अस टू बी माइंडफुल, टू बी इन द मोमेंट, टू लिव वन मोमेंट इन टाइम. एंड एक रीज़न जो था, हम लोग टिपिकली फ़ोन उठाते हैं, हम आई एम टॉकिंग अबाउट द एडल्ट्स नाउ, कि आई हैव डन अ लॉट, अभी बहुत कुछ काम करके किचन में से आई हूँ, सैट डाउन, लेट मी पिक अप द फोन एंड गो थ्रू सम रील्स. सो what that means is that we need something to actually relax and unwind, but the one which is not as addictive as the digital devices. So before my son was born, I really loved to do Sudoku, और मैंने उसको और रिसर्च किया तो पता चला कि it is a beautiful way of being in the moment, of being mindful, and it gives you a similar dopamine rush as going through a video on a YouTube channel or a reel on Instagram. And the thing is that it is not harmful. It is in fact a beautiful habit to keep your brain active and ensure that new neural pathways are formed. So Sudoku helps in making new neural pathways. Whenever we are able to solve a Sudoku puzzle, the same dopamine is released in our bloodstream. And more than that, जो एक positive part है Sudoku का, वो ये है कि it helps you to make
it's like a gym for the brain, है ना. Physical activity ज़रूरी है, gym ज़रूरी है, walk ज़रूरी है for the physical muscles to be active. Similarly, for the mind to remain active, it's important that we also do exercises for the brain. So the book has 3 basic sections. So one is for Sudoku puzzles. As I told you, it is very, very helpful in keeping the brain active. And similarly, the second section is for the affirmation coloring. अब ये typical coloring नहीं है, ठीक है. It is majorly used to get a positive message into the subconscious mind. So if you really want to understand more about how the subconscious mind works and how the affirmation works, so please write in the comment section below. If you want to know about more about it, I'll make another video for that too. So coming back to the mindful minutes, तो सेकेंड सेक्शन जो है वो एफर्मेशन कलरिंग का है, जहाँ पे हम एफर्मेशंस कलर करके हम अपने सबकॉन्शियस में उसको ले जा रहे हैं. एंड दोज पॉजिटिव एफर्मेशंस रियली वर्क in actually making things easier for the youth. The third part, which is vital, is a couple of self-reflection questions at the end of each section, which actually start developing the habit of journaling in the youngsters, जो हमने शायद बहुत बाद में सीखी. And it's really important. You know, our brain creates 60 to 80 thoughts every minute. Most of the thoughts are negative. ये हमारा brain का function है. When we actually write down whatever is there in our mind, it gives much more clarity on what exactly is bugging us. Is it in our control or beyond our control? If it is beyond our control, then there is no point pondering over it. And then we can selectively look at things which are in our control and then try to solve them one by one. So the clarity starts happening when you start journaling. तो ये तीनों sections हैं इसके अंदर, and I hope you'll pick it up and help yourself digitally detox using mindful minutes. Thank you. God bless.